Now we are back. Okay. Abe, 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 abe. Bro. Okay, where's the non-copyright music? And then we are gonna keep writing about Salman Bhai. Non-copyright music. Where are you? Is this the one? 3 hours of no copyright. Let's go. Okay. Okay. I think this is a good way of actually writing. I don't get deviated because my chat is with me. Chalo guys, back to study. After every 40-45 minutes, I'll open the chat and read. एक बार अभी फिर से एक बार जल्दी से खोल के देख लेता हूँ chat. Okay, we are off to study.
People care. People want to just people want manage to bury or hatch it what has happened in the past. Here under one roof with you, like did you all manage to bury or hatch it what has happened in the past? Why do you care? I do care because people care. People want to गुस्से से बिफरते सलमान को देखिए जब सलमान फोटोग्राफरों और मीडिया की भीड़ को देखकर आपा खो बैठे थे। ये तस्वीर कुछ साल पहले की है जब सलमान मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में आए थे। उनके आने की खबर लोगों को मिल गई थी, लिहाजा अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ जमा हो गई थी। मीडिया का भी पूरा जमावड़ा मौजूद था। सलमान की तस्वीर लेने की कोशिश में फोटोग्राफर और कैमरा पर्सन सलमान के कुछ ज्यादा ही करीब हो गए। इसी अफरा तफरी में सलमान को धक्का लग गया। फिर क्या था? सलमान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सलमान का दिल मानो बिल्कुल बच्चा है जहां एक और मीडिया में उनकी दरियादिली की दास्तां आती है तो दूसरी ओर उनकी तुनक मिजाजी भी मशहूर है। सल्लू का जो मनमौजी रवैया आज दिखा उसका दीदार लोग पहले भी खूब कर चुके हैं। क्या सलमान फिर से पुराने अंदाज में लौट रहे हैं या फिर सलमान बदले ही नहीं? वो अब भी वैसे ही है जिसकी तस्वीर लोगों के जहन से आज भी हटी नहीं संभलता सलमान का गुस्सा। सल्लू की मीडिया से धक्का मुक्की। गुस्से से बिफरते सलमान को देखिए दफ्तर की जमावड़ा और क्या मान को वो अपना सलमान दरअसल पहले हाथ मिलाने गुस्सा से रिहाई पड़ेगी, लेकिन सलमान है कि मानते हैं। बॉलीवुड की कहानी भी बड़ी ही अजब गजब है। यहाँ रियल लाइफ किरदारों में भी जमीन आसमान का फर्क है। तभी तो मुंबई में एक मुहूर्त शॉट के समारोह में सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड की करतूत पर खेद जताने के बजाय उल्टा जिस महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई थी उसका ही मजाक बना डाला। मुंबई में एक ऐसे ही मामले में
कटरीना के बॉडीगार्ड ने किया था ऐसी ही गलती की थी तो कटरीना ने तुरंत इसके लिए अफसोस जाहिर किया। वैसे माना तो यही जाता है कि सलमान और कटरीना एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन कम से कम इस मामले में उनके बर्ताव में बहुत बड़ा अंतर साफ दिखाई दिया। भाई चैट 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 थोड़ा सो लेता हूँ मैं, हैं। बाकी तुम पढ़ाई करो तुम लोग, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। गाना चलता रहेगा और सलमान भाई को भी चला ही देता हूँ मैं। That your children grow up and they're well settled, and then their children grow up and they're well settled, married, happy. That is. You are becoming like Salim uncle day by day. You know, he's also a little detached from the world. जाके पनवेल में Yeah. बैठ जाते हैं, मीडिया से कोई वो नहीं काम But I've always done. I stay most of the time at Panvel. When I'm not shooting, I've stayed Panvel. आप पनवेल में ही रहते जी. हैं. Okay. Do you think you're getting detached from the world? No, I'm getting closer. You're getting closer? Yeah. How? Yeah. I'm there with the nature. I'm there with. This is not the world. Yeah. Okay. The world is something else when you're all together. Yeah, of course. आराम से रहो, खुश रहो, पेड़ पौधों के बीच खेती बाड़ी करो. That is the world. Chill out, enjoy your life, family के साथ. I आपको लगता है don't. आप इस वक्त अपने लाइफ के बेस्ट टाइम में हैं और there's yet No, it's yet to come. to come? Yeah, I'm on 2%. जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि मुस्लिम एक्टर्स को फौरन एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए वरना उनकी जान को खतरा तक है। आप इन बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं? मुझ तक ये बात पहुंची नहीं. एंड मान लीजिए पहुंचती तो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जब मुझ पे पहुंचेंगी तो मैं बात करूंगा इसके ऊपर. I don't think anybody's going to do that. You don't? I don't think so. ओके. नेचर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनएविटेबल हैं, जो हमारे इंसान के बस में नहीं है. जी. उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप घबराते हैं? None. फॉर एग्जाम्पल अपनी पुट अनदर वे, 10 या 15 साल बाद सारे एक्टर्स या हम जैसे खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरती खो देंगे. कुछ ऐसे भी हैं जो शायद ओब्लिवियन में चले जाएं. 15-20 साल बाद ऐसा होगा. Where do you see yourself? Do you see yourself कि आप फाइनेंस टर्न हो जाएंगे या आप कैरेक्टर रोल्स करने लगेंगे या आप बाकायदा पनवेल में जाके सेट हो जाएंगे? अब गलत शख्स से ये प्रश्न पूछ रही हैं. मैं इन तीनों चीज़ों से नहीं घबराता. नहीं घबराते? ओके. जितना ऊपर वाले ने दिया, जब तक कि जब पैदा हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि मैं पैदा हो रहा हूँ. जब मरूंगा तो मुझे पता नहीं कि मैं मरूंगा. सो आई डोंट इवन बिलीव इन ऑल दीज साइंसेस के एस्ट्रोलॉजी दिस दैट ये वो. फिर पता चल रहा है कि भैया कि आप कल मरने वाले हैं तो आपका आज का दिन भी खराब हो गया ना कि कल जाऊंगा तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं. इट्स द लॉ ऑफ नेचर. यू गोइंग जो जिया है वो मरेगा तो सही. तो अब वो प्रॉब्लम तो एवरीवन नोज दैट, बट कैसे जाएगा, कब जाएगा, दैट इज द. आप पॉजिटिव लाइफ है ना? तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन. खबरें आ रही हैं आपके और शाहरुख की. Now, it's a small world, it's a small industry. क्या आपकी दोस्तियां इतनी सेंसिटिव होती हैं या आप उतनी सेंसिटिवली उनको ट्रीट करते हैं कि जरा से भी खलल पड़ जाए तो दोस्ती? नहीं बिल्कुल नहीं. मैं खुद इतना कभी कभी इतनी गलतियां कर जाता हूँ दैट all I have to do is pick up the phone and say sorry, but I'm not sensitive at all. But if something is there for a long time, I'm not talking about this guy, this canal, yeah. Anything. Okay, if something is going wrong, it's not like the first time something happens you react to it. It happens once, twice, thrice, 1,000 कई बार times. कोई चीज़ होती है तब आपको तो वो तो किसी को दिखता नहीं है. तो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया. छोटी सी बात पे, पर वो छोटी सी बात वो बहुत पहले से बहुत बड़ी होती थी.
तो आपको जब आप कई बार जब आप जी बहुत बहुत पेशेंस है मुझ में, बहुत पेशेंस है मुझ में, इसलिए तो फॉर एग्जांपल जो मेरे बारे में लिखा जाता है, या कुछ भी एक सोर्स के थ्रू, एक इसके 100 थ्रू, में एक से उसके कितनी थ्रू, खबरें गलत होती हैं जो मैं अखबार आई में थिंक 100 रियली जी कई बार तो बहुत नेगेटिव होती हैं आप जी. So now I have the patience. Otherwise, if I didn't have the patience, I would have broken all these offices. It's simple. So I have the patience, and I don't care, because when I interact with my fans, they know who I am, what I am. If I get angry, also I get angry for right reasons, wrong reasons. But then it's me. और ऐसी कोई चीज़ नहीं करता कि जो किसी आम इंसान ने नहीं की हो. So I'm just a normal guy. I want to be a normal guy. You guys want me to live like a star. I don't want to live like a star. I want to live like a normal person. लेकिन आप प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका असर होने देते हैं. Would you work with those people जिनको आप नहीं पसंद करते? No, I will not work with those kind of. No, because you know what? Why? There's no need. Either, but I will not take anybody out of a film. I myself will back हाँ, नहीं out. करेंगे. I will not. No, I will not. So I'm different. तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ, तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा. She can take her own decisions. वो अपनी फिल्में खुद चुन सकती हैं, वो अपने एक्टर्स खुद चुन सकती हैं. Of course, yes. You would be a support to her. Yeah. खबरें आ रही हैं आपके और शाहरुख की. Would you work with those people जिनको आप नहीं पसंद करते? No, I will not work with those. You will kind not of- No, work. because you know what? Why? आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? I don't know who you're talking funny. सलमान खान 40 प्लस की ढलती उम्र, लेकिन जीने का अंदाज कुछ ऐसा है जनाब का कि एक तरफ हर नौजवान सलमान बनना चाहता है तो दूसरी तरफ खूबसूरत और कम सिन लड़कियां उन पर मर मिटने को तैयार रहती हैं। सलमान के लव कनेक्शन कई हुस्न की परियों से जुड़े। कभी किसी से उन्होंने कहा मैंने प्यार किया, कभी किसी से कहा हम दिल दे चुके सनम, तो कभी कहा प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन बावजूद हसीनाओं के साथ के सलमान ने आज भी अपने दिल पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। जाए बस जाए सारी कंट्री, इश्क दी गली विच कर एंट्री, ओ इश्क दी गली विच कर एंट्री. लव गुरु यानी कि सलमान खान सिर्फ अपनी मस्कुलर बॉडी और लुक्स के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि अपने बड़बोलेपन, कंट्रोवर्सी और रोमांस भी उन्हें हर वक्त सुर्खियों में बनाए रखता है। कभी चिंका हेलो
खाना आया है भाई, अभी देखते हैं बैठो। सो भी खाते हैं भाई। कारा तो कभी किसी को मारा, कभी ये होते हैं किसी के हमदर्द, तो कभी कोई दे जाता है इन्हें दर्द। कभी कटरीना से प्यार तो कभी ऐश्वर्या से तकरार, और कभी शाहरुख के साथ डिशुम डिशुम भी। यानी लाइफ ने एक फिल्मी रंग ले लिया है जहां हर मोड़ पर कोई ट्विस्ट है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। 20 साल की अपनी रियल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखने वाले सलमान की रियल लाइफ ने भी उनको जिंदगी के कई सबक सिखाए हैं। पर क्या है इस चंचल मन के पीछे? कौन से राज हैं जो उनके दिल में हैं पर जुबान पर नहीं? क्यों सब कुछ पाने के बाद भी एक खालीपन सा है जिंदगी में? क्यों वक्त उनसे कह रहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। एक खुशरंग एक्टर, लार्जर देन लाइफ ऑन स्क्रीन हीरो एंड अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। यस ऑफ कोर्स ही इज सलमान खान, राइट हियर विद मी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। जहाँ तक मेरा ख्याल है फिल्म इंडस्ट्री में आपने अपने पूरे करियर में अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं रहे हैं, लेकिन आई कैन सी योर लॉन्ग लाइट ब्राउन हेयर व्हिच इज अ वेलकम चेंज। इट हैज गॉट अ लॉट टू डू विद द फिल्म यू आर डूइंग राइट नाउ। वीर? No, this is not the look for Veer. I've just finished shooting, so I removed the. और वो जो आपके बहुत लॉन्ग हेयर थे, आई कैन सी पीछे कर दिया मैंने बाल अपने। वीर की कहानी आपने लिखी है जी, राइट? आप लेजेंडरी राइटर सलीम अंकल के बेटे हैं। आई वंडर्ड कि आपको इतना वक्त क्यों और कैसे लगा लिखने क्योंकि एक पिक्चर मैंने लिखी थी पहले और बहुत बड़ी हिट हुई। सेकंड ट्राई की तो उस प्रोड्यूसर ने उसके बाद कोई पिक्चर नहीं बनाई। No, but then you are creative, you are a soft-hearted person, emotional person, you know the emotions of life. So I guess you can be a very good storyteller. I get carried away. मतलब? मीन्स कुछ ज़्यादा इमोशन, जब एक्शन पिक्चर लिखूंगा तो कुछ ज़्यादा ही एक्शन होगा, इमोशन लिखूंगा तो कुछ ज़्यादा ही इमोशन होगा, कॉमेडी तो कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी। तो तुझे अक्सर भी जुगमा दूं, आज चलती क्या। Coming to your film, Got to See Great हो, हाल ही में रिलीज हुई और एक बड़ी फिल्म के साथ रिलीज हुई। Tell me, how has the response been so far? It's been good, very good. People have loved the film, from children to वो था like एक mask. I don't know what this mask class is, but आप नहीं मानते master class? बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं कहाँ फिट हूँ? मास्क में फिट हूँ या क्लास आप तो मास्क में फिट है सलमान। मुझे ऐसा पोर्ट्रे कर दिया कि मैं सोशली मिसफिट हूँ। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना रूमी जाफरी साहब, वो आपके लॉन्ग टाइम बहुत ही यस एंड क्योंकि ये फ्रेंड है इसलिए मैंने ये पिक्चर नहीं की, क्योंकि इन्होंने 21 हिट एज अ राइटर दिए हैं बैक टू बैक। So that is the reason why he's done this film with me and I've done this film with him. लेकिन जैसा कि आपके बारे में एक नोशन है भी कि when it comes to friends आप दिमाग से ज़्यादा दिल से फैसले लेते हैं। Yeah, but हाँ, but अभी वो change हो गया क्योंकि I've realized that the fans who go and watch my movies they spend so much money, तो कहीं ना कहीं वो cheat feel हो जाता है। तो now I'm doing a guest appearance in Hello, I'm doing a guest appearance in Heroes, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो दोस्त हैं, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी लगी और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे अदर स्टार्स हैं इन दोनों पिक्चर में। लेकिन आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसे फैसले किए, जैसे कुछ दिनों पहले सुनील शेट्टी साहब से भी मैं मिली थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हम में से कई एक्टर्स ऐसे हैं, सीनियर एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने गलतियाँ की, दोस्ती बट दैट्स ऑल गुड, बट इवेंचुअली कम्स टू दैट, वो कुछ जब तक स्क्रिप्ट बराबर नहीं हो तब तक वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो फ्राइडे सैटरडे संडे इवन द डिस्ट्रीब्यूटर्स नो कि इनका काम सिर्फ इतने दिन का है, तो उससे कोई एडेड एडवांटेज नहीं होता। सिर्फ नो फैंस को भी पता चल जाता है कि अच्छा इस पिक्चर में सिर्फ एक गाना किया है, राइट, तो वो तो देख लिया हमने टीवी पे। हाँ
आपको लगता है कि एनी अमाउंट ऑफ PR पब्लिसिटी कितनी भी हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो जनता भाग जाती है? जी 100%। वो फ्राइडे सैटरडे का इनिशियल तो ले लेंगे, उसके बाद संडे से जो मंडे से ड्रॉप होना शुरू होता है। और कितनी और एक पिक्चर के बारे में कितनी ही बुराई कर लें आप, जो क्रिटिक्स जो होते हैं, जो कभी कभी ऐसे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हर पिक्चर को पुल डाउन करने की शायद क्योंकि वो नहीं बना सकते तो किसी का। आपको क्रिटिक्स नापसंद है? नहीं पसंद है? मुझे वो उनका ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन दें, फोर्स ना करें। और ये भी देख लें कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिनको 1 स्टार दिया है, 2 स्टार दिया, वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज हैपेंड। कहीं जगह बहुत अच्छा भी लिखते हैं कि भैया ये मत देखना। वो ऐसे लोगों के लिए ठीक है, लेकिन फॉर माई जो मेरे लिए, मैं कभी तो ये झूठ बोलता नहीं हूँ कि ये पिक्चर ज़रूर जाके देखना, इस पिक्चर में ये वो मेरा देख ही जाता है कि इस क्या बोले द वे आई एक्सपेक्टेड द फिल्म टू टर्न, आई डिडंट टर्न आउट दैट वे। और जो पिक्चर मुझे अच्छी लगती है वो बोल देता हूँ कि मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, सो द फिल्म सुपर फिल्म। या ओके, आपको इतने साल हो गए समाज फिल्म इंडस्ट्री में, आपके फादर राइटर रहे हैं, आपका एक्सपोजर रहा है, you've been there, done that, you've seen scripts and you know what kind of scripts work and which ones don't. आपके co-stars, आपके colleagues, आपके contemporary कई ऐसे एक्टर्स हैं, अजय देवगन साहब, आमिर, शाहरुख, या तो full fledged directors बन गए या full fledged producers बन गए हैं। Your life has been eventful too. You have so many stories to tell. You have a creative mind. आप अभी तक डायरेक्टर क्यों नहीं बने? I wanted to be a director. I didn't want to be an actor. I didn't want to be an actor. So I've started off being a director. I went to people, I didn't get work. Then I started getting offers. सुनने में बड़ा अजीब लगता है, you didn't get work. Yeah, I didn't get work for the longest time, for about a year. Then people started saying, you should become an actor. So I tried for acting, I didn't get work. तो वो कोई बोलता था 6 महीने पहले आ गए होते, तो बोलता 6 महीने बाद आओ, you're too young for this role, this role I want somebody like this. तो ऐसे करते फिर एक मुझे बीवी होते ऐसे मिल गई और उसके थ्रू मुझे मैंने प्यार किया। So I've been lucky. आजा शाम होने आई, तो किस बात की है लड़ाई? What qualities one must have to be your friend? It's a connect, yeah. It just connects. Some people like आप किसी को देखते हैं and at once you get to like the person. Some people on the first look only you don't like the person. You believe in aura. Yeah, I believe, and then some people you like the person and you realize that इससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है. And then the other way around, that you don't like the person and later on you find out that अरे very straight guy. तो कभी वो होता है कि some straight people come and then you feel that who is he? But later on when you get to know that person, he turns out to be like the nicest guy, the straightest guy. आपको लोगों की पहचान है? नहीं, कभी हो जाती है, but no, not really. लेकिन जैसे छोड़िए, बोलिए। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का। अगर मैं कहूँ कि God has been very good to सलमान खान, उसकी 5 मिसालें दीजिए। 5 के मैं 5000 मिसालें देता हूँ। Like ये मेरी उंगली भी सलामत है। yes, true. हाँ, बिल्कुल। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सलामत है। पेरेंट्स, फैमिली, nieces, nephews, इज्जत, शोहरत, दौलत, everything। रिलीजियस हैं आप? जी, शुक्रिया अदा करते हैं। of course। अगर नहीं करूँगा तो सबसे बड़ा नाशुक्र होऊंगा। पहला प्यार है, पहली बार है। She can take her own decisions.
वो अपनी फिल्में खुद चुन सकती हैं, वो अपने एक्टर्स खुद चुन सकती हैं. You would be a support to her. Yeah. खबरें आ रही हैं आपके और शाहरुख की. Would you work with those people जिनको आप नहीं पसंद करते? No, I will not work with those. You will not No, work. because you know what? Why? आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? I don't know what you're talking funny. Thank you very much, Salman Khan, for joining us. You're welcome. So, how was the experience really like? Educational. It was okay, actually. It was meant to be. I had to see that side once again. Went through it, saw every bit of it, came out, and I'm cool now. I'm fine. Learned quite a bit. Saw what people were going through inside. Perhaps I needed to go inside. Why It's a do you good say thing. that? All these luxuries in our lives, and never seen that much of pain and discomfort. And we see the common man, most of the people who are not even responsible for what they've been put behind bars for, suffering behind that. It's a really sad experience. If they could go through it, so could I. Just gets a person back down to the ground. I believe you were in a cell alone. So, what did you think about during your hours there and leading a kind of like getting up early? You had maybe not time to reflect. First, it kind of hurt. Not for the reason that I was in jail. It didn't matter. I mean. It was like for me, like I'm at home because I very rarely step out of the house, so I'm not that much of an outdoor person. But the fact that on one hand there was so much of respect that I got, and on the other hand there was so much of slack and disrespect. So just that bit hurt. And for something perhaps that I didn't do, that was the bit that hurt me the most. And the second time over it. But then I guess it was destined to be, and nobody was in nobody's power to see that. I wouldn't see that side of it. I had to be there. I was there. I saw it, and learned quite a bit. During your time in jail or even before or now, you must also be thinking of the people, or people who were injured or dead, and feeling really bad about it all. Yeah, it was very, very unfortunate. I've never had an accident. My car has never been even scratched before. I've picked up a lot of people from the streets who have when there's an accident, you usually see this scenario where people are just standing and no one's, the guy's lying on the floor, no one's picking him up. I've picked up a lot of these kind of people, and there came a time that my car went into some people, and I could not take them to the hospital. The
person who died, very unfortunate he died. But the guys who were hurt, the guys who broke their legs, whose arms were hurt, the hospital was about, what, not even 20 meters away from there. And those guys started throwing stones, the people who were there, throwing stones and stuff like that. I was there throughout all that stuff, trying to pick those people up, till the time they recognized me and they asked me to leave. But I just didn't want to leave, because I have done this before. I've picked up people, and the irony of life is that they came under my car, and I could not take them to the hospital. The worst part was that they said that I ran away from the scene. No, I didn't run away from the scene. There were stones that were being thrown at me at the car. Kamal got hurt. I got hurt. One rock came and hit me in my knee, messed my knee up, one in my thigh, one in my back. When I bent down to pick one guy up, a stone came and broke my windscreen, which was actually aimed at my head. I survived that. So it's very sad that people said that he ran away, and they said that my brother went to pick up a stereo system, which didn't make any sense at all. It was something went wrong. Maybe it's karmic. I don't know what it is. I have to see this kind of humiliation. And I saw it, and I think I've come out of it fine. I think this is a process of growing up. There's some things that you learn from in life. And I hope these things don't happen to anybody else. There's some people who can handle it. Some people can't. One thing that all the time, whenever I tried to shut my eyes to sleep, I saw that the man who died, his mother, what she must have been going through. That the man who died, he's gone. I don't even think he knows that he's dead. But the mother, when she has seen his body, it just like comes to me. Just she's right. I haven't seen that lady, because if I went and saw her, they would say that he's trying to tamper with the evidence and bind the witnesses, stuff like that. So I stayed away from that. When I stayed away from that, they said that he didn't care about those people. So I was caught in a catch-22 situation. And that lady, who I've never seen, just kept on coming in front of my eyes. I couldn't get much sleep, because as soon as I shut my eyes, I could see my car going into those people. And the mother at home, wherever she lived, in that small hut, without a son, that just killed me. What killed me even more was that it was said that he didn't care, which is not true at all. That was actually kind of disgusting. No one even bothered to ask me at that point in time that I didn't care. They were just out to take a piece of Salman Khan. And they took quite a few pieces of me for their own benefits. To get publicity, or to make a name, or to sell a newspaper or a magazine on somebody else's misery, I think is very disgusting. Salman, my heart actually goes out to you, and I mean it. It should not. But let me ask you, what is next? It was very unfortunate. But do you think you've also come out wiser? Yes, it has been an experience, but have you come out wiser? See, you grow each day. These are things that you say in life that, you know, this could never happen to me. And there you are. It's happened to you. You know this. It's not that you come out wiser. You know that this has happened. And if this happens, you would feel like this. But then when you actually experience that, suddenly it relates to your family. It relates to your mother seeing me or Baz or somebody like that gone. What would her state be? But now this has happened to me. My child, me and my wife will go through when we see our son's dead body there. But these things, eventually it all becomes very selfish and very personal. And it comes to just you. And which is very scary. I mean, life is an accident.
death is not. Everyone has got to go. Whoever has come is going to go. You come alone, you go alone. Everybody's aware of the fact. They come and say, "ठीक है ना यार, accident था, गलती हो गई. Take it easy. Go ahead in life." Very easy to say that. But the guy who's been involved in that, no matter he may smile, he may laugh, get a few jokes here and there, but he goes through that for the rest of his life, thinking as to someday I hope this doesn't happen to me, because what goes around comes around. Maybe I'm wrong in surmising or deducting this, but do you somehow after all this feel that maybe it's a new beginning for you, maybe a new life, or do you find yourself changed, or want to break afresh, start afresh, break away from the past? No. There's nothing about me that has changed. If I can understand that if a guy who's done only bad deeds and has gone through this spiritual healing, or has gone through one bad accident or one thing that he's gone through and he felt really guilty about, which is done deliberately, and then he changes over, there was nothing wrong with me. I mean, I don't think I need any psychiatric help.